तुम कहाँ से मिला क्वेश्चन? तो ये सब तुम ट्राई किया और ये क्वेश्चन prove that the diagonals of the parallelogram are at right angles to one another. Prove that the diagonals of the parallelogram are at right angles. कौन सा parallelogram? Formed by these four lines. चार लाइंस एक पैरेललोग्राम बना रहा है, उसका डायगोनल्स और परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रूव करना। उसके लिए एक टेक्निक है, ये लाइन और ये लाइन को सॉल्व करो, यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसा चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। उसके बाद फाइंड द स्लोप ऑफ AC and the slope of BD and show that the product is -1. M1 M2 is equal to -1. ऐसा अगर मिल गया तो मतलब ये diagonals are perpendicular to each other. बोलो। तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला मेथड हो गया, लेकिन अगर हम ज्योमेट्री को देखें, ज्योमेट्री पैरेललोग्राम में these two are equal, A है तो ये भी A, ये B है तो ये B। Parallelogram में diagonals bisect each other, we know that. इतना पैरेललोग्राम के साथ आता है। पैरेललोग्राम में ये बिल्कुल जरूरी नहीं था कि diagonals be perpendicular to each other. वो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मैं बोलता हूं दैट विल बी अ rhombus. Diagonals bisecting each other as well as diagonals perpendicular to each other, it must be a rhombus. Yes. और स्पेशल केस होगा स्क्वायर। हाउ इज अ rhombus एंड अ स्क्वायर डिफरेंट? दोनों में चारों साइड्स इक्वल होता है, दोनों में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल इन लेंथ। रोम्बस में वो जरूरी नहीं है, एक डायगोनल बड़ा दूसरा छोटा ऐसा हो सकता है। अगर दोनों डायगोनल भी इक्वल हो गया और परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गया तो वो स्क्वायर, which is a special case of a rhombus. Yes. But how will you show that it's a rhombus?
by showing that all four sides are equal. On है? On है? हाँ. So तो कल मैंने नोटिस किया कि बीच में किधर तो ऑडियो नहीं है. I think it's okay. हमने ऑलरेडी मेथड डिस्कस कर दिया था. मैंने बोला यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ए सी एंड बी डी एंड शो दैट देयर प्रोडक्ट इज -1. स्लोप का प्रोडक्ट -1. ये बस थोड़ा ज्योमेट्री डिस्कस कर. इफ यू कैन शो दैट ए बी is equal to BC is equal to CD is equal to AD by distance formula, then you can say this is at least a rhombus. And in a rhombus, diagonals are perpendicular to each other. तो वो पूरा ज्योमेट्रिक वाला बात हो गया. लेकिन वो 10th वाला मेथड हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करना मतलब. So in the 11th standard, what you can do is find the point of intersections. You know to solve and find the point of intersections. 10th standard linear equation 2 variables नहीं सीखा क्या? √3x plus y is equal to 0 और √3y plus x is equal to 0. The point of intersection is 0, 0. Because दोनों में C नहीं है. मतलब दोनों लाइन ओरिजिन से पास होता है, तो फिर दोनों कहाँ इंटरसेक्ट होता है? ओरिजिन. हाँ, लेकिन चलो तुमको सॉल्व करना तो सॉल्व कर दो. पूरा √3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 3y प्लस √3x इज इक्वल टू 0. इन दोनों को सेपरेट करो. ये √3x और ये √3x कट हो जाएगा. -2y equal to 0. Therefore y is equal to 0. And when y is 0, x is also 0. How to solve two linear equations is not a topic of discussion. तुम कैसे भी सॉल्व कर दो. बोलो. मैं थोड़ा इसको परफेक्टली स्केच करने की कोशिश करता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन √3x plus y equal to 0 और y is equal to -√3x. तो इसमें tan theta slope is tan theta which is minus, देखो ना, y is equal to mx. y is equal to mx plus c. c नहीं लिखा है मतलब ओरिजिन से पास होता है. तो स्लोप -√3 आ गया. सो व्हाट विल बी थीटा? इट विल बी 180 - 60. नेगेटिव छोड़ो. कब होगा tan थीटा √3? 60 के लिए. लेकिन ये नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट. इसलिए 120 डिग्री. बोलो. सो this is the line. This is the line √3x plus y is equal to 0. क्वेश्चन डिस्कशन हो गया है. कैसे करना है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. हो गया था बात. मैंने बोला दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट मिलेगा. ए सी का स्लोप निकालो, बी डी का स्लोप निकालो, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स -1 दिखाओ. हो गया. ये थोड़ा स्केचिंग वगैरह सब डिस्कस कर रहा है. लुक एट दीज टू, दे आर पैरेलल लाइंस. a1 by a2 and b1 by b2 are same, therefore they are parallel lines. तो ये इक्वेशन होगा √3x plus y equal to 1, therefore y is equal to -√3x
+1 मतलब सेम स्लोप लेकिन y इंटरसेप्ट 1। तो सपोज ये है 1, तो ये है हमारा लाइन, ये लाइन का इक्वेशन है √3x + y = 1। चलो, नाउ लेट अस टेक दिस वन, √3y + x = 0, √3y = -x, y = -1/√3x। बोलो, तो इसमें स्लोप m क्या होता है, tan थीटा विच इज -1/√3, therefore theta is equal to 180 minus 30, that is 150 degree, and passing through origin। देखो इसमें कांस्टेंट 0 है। ये है 150 डिग्री वाला। 150 डिग्री एक्चुअली मुझे नहीं बनाने आता था, लेकिन मैंने यहाँ से 30 ले लिया, तो हो गया यहाँ से 150। ओके, 180 minus 30, ये है ना 180, उसमें से 30 कम किया, सो ये है लाइन √3y + x = 0। अभी नेक्स्ट वन, उसका पैरेलल वाला, इसका पैरेलल है, तो उसमें क्या है, इधर = 1 है। 1/√3, तो 1/√3 विल बी समवेयर हियर, एंड उसका पैरेलल। स्टूडेंट्स वो हो गया पैरेललोग्राम्स और डायगोनल्स और वो नहीं, मैं बस तुमको लाइन स्केचिंग सब थोड़ा बता रहा। तो स्टूडेंट्स ये रहा मेरा पैरेललोग्राम। डायग्राम इतना परफेक्ट नहीं हुआ बिकॉज द डायगोनल्स इतना परपेंडिकुलर टू ईच अदर जैसा नहीं लग रहा है, बिकॉज रफ स्केच बनाया। Let us just validate this with the help of the software. The first equation is, yes, √3x + y = 0। थोड़ा सा पैरेलल है ना। नेक्स्ट वन = 1। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा, √3y + x = 0। नेक्स्ट सेम थिंग, लेकिन यहाँ पे 1। चलो, इसमें तो ओरिजिनल ग्राफ में तो पता चल रहा है कि द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। One diagonal, this is the other diagonal। Isn't it perpendicular, the diagonals? तो एक काम मैंने
तुम लोग को छोड़ दिया कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. Kab, you want me to solve the two equations and find the point of intersection and find the slope and show m1 m2 is -1? ये सब थोड़ा नेक्स्ट लेवल वाला क्वेश्चंस हो गया. Anyway, not a question related to CBC. A, B, C, D. All these equations represent circles. (13x square plus 13y square minus 83x plus 64y plus 182 equal to 0. All those four equations represents circle. Yes, students. 5x minus 12y is equal to 13. A point is moving with some condition. एक point इस ग्राफ पेपर के ऊपर मूव हो रहा है, but not randomly at any point at its wish. Controlled by some mathematical condition. क्या है वो? बोला है the square of its distance from the point is equal to the distance from the line. So we have the point 3 comma minus 2, and so here is a point P which is at a distance A from the given point and at a distance B from the line. Point P is at a distance A from the point 3 minus 2 and at a distance B from the line. The question says A square must be B. एक बार और सेंटेंस देखो. A point moves so that the square of its distance from the point is equal to its distance from the line. Yes. Clear हो रहा? You just need to spend time with the question, read, break it into parts, understand line by line. तो एक point है, उसका distance from a point और उसका distance from a line, ये हमको निकालना. लेकिन वो point कहाँ होना चाहिए? ऐसा location में which satisfies the given condition. What was the condition? That the distance towards a point का square must be equal to distance from the line. Yes. Now, suppose P is such a point. But is that the only possible point for P? No, P can have another location where the distance towards the point and the line has changed, but still satisfying this condition. A and B का value change हो गया. A मतलब distance towards the point and B मतलब towards the line. वो A और B change हो गया. लेकिन A square is equal to B. ये condition को satisfy करना चाहिए. So let P move, but always maintaining the condition that A square must be equal to B. And when it moves, it is actually following a circle. So this circle
Not the one which I have shown. We don't know. There were 4 options. हमको correct वाला ढूंढना है. बोलो, सबको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let P x comma y or say let P x comma y be such a point satisfying the condition. So according to the question, PA square must be PM. How much is PA square? X minus 3 the whole square plus y plus 2 the whole square. मैं रूट नहीं लगाया because हमको स्क्वायर चाहिए था. Is equal to PM. PM is 5x minus 12y minus 13 divided by root of 5 square plus 12 square. I used the formula for distance between a point and a line. Yes. अगर ये x1 y1 होता तो ये x और y के लिए मैं x1 y1 डालेगा. अगर यहाँ पे 2,3 है तो ये x और y के लिए 2 और 3 डालेगा. लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट लिया? x, y. Simply x, y. Because x1 y1 means one particular point. हमारे इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं. There are many possibilities of that P. तो इसलिए I just kept as x and y itself. What is that x and y? The coordinate of that moving point P. The point moves and we will get a path. The path traced by the moving point. That path is called locus. Locus simply means the path formed by a moving point. The shape of the path made by a moving point. Okay, so this is the last line. The equation of the locus of the point is, मतलब उस point जो move हो रहा है ना उसका path का equation क्या है? None of the answers were linear equations. That means you are not going to move along a straight line. The path followed by P is not straight. Anyway. X square. मुझे लगता है आंसर इज द वन विच वी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ नाउ 13. हाँ, बिकॉज ये 13 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर 13 आएगा. माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 5x minus 12y minus 13 divided by 13. अब मैंने मोड हटा दिया. मतलब देर आर 2 पॉसिबिलिटीज प्लस और माइनस. देखते हैं वो आंसर उसमें कौन सा आता है. देखते हैं. मल्टीपल चॉइस है तो उसमें जो दिया है वो हमको सेलेक्ट करना. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x plus 4y plus 13, the whole into 13 is 5x minus 12y minus 13. Hmm? 13x square plus 13y square minus 83x plus 64y.
plus 182 equal to 0. I think that was the first option. Yes. बोलो. Yes. Yes. The line was 5x minus 12y equal to 13, and the point was 3 comma minus 2. Every point on this black curve satisfies the given condition. Yes. You keep moving along that black curve, you are satisfying the given condition. What is that? Your distance towards a fixed point, ka square, is equal to distance towards the line. पर और देखो क्वेश्चन करके. तो इस क्वेश्चन में दैट फाइनल आंसर इज अ सर्कल वाला नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा, बिकॉज हमने डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन वाला जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट तो लास्ट ईयर का आइडिया था, लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आज इस साल का है, तो उससे हमारी आंसर हो गए. लेकिन मैं बस बता रहा था कि वो इक्वेशन जो है वो सर्कल है, सारे सर्कल्स है वो एक्चुअली. ऑल द फोर गिवन आर सर्कल्स. बोलो. Yes, sir.
The coordinates of point A and B are given. Then the length of the portion of the line AB intercepted between the axes is. A and B coordinates are given. A और B से पास करने वाली एक लाइन मैंने बनाया. This line is intercepted by the two coordinate axes. X axis और Y axis में intercepted portion कौन सा है? ये इसको बोलते हैं intercepted portion. So this is a line X axis, Y axis, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है ना उसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस. मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो पोर्शन है उसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड पार्ट. देखो, if the coordinates of the point A and B are given, then the length of the portion of the line AB intercepted between the axis is, मतलब ये PQ का लेंथ पूछा है. उसके लिए P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है. How will you find the coordinate of P and Q? First, find the equation of the line passing through AB. Y minus 3 is equal to 6 minus 3 by 7 minus 3 into x minus 3. That is y minus 3 is equal to 3 by 4 into x minus 3. Therefore, y is equal to, या फिर रहने दो, ये है equation of the line. To find the coordinate of P, you know the y coordinate is 0 because P is on the x-axis. हाँ, तो y के लिए 0 डालो तो आएगा -3 is equal to 3 by 4 into x minus 3 minus 1 minus 4 is equal to x minus 3. Therefore, x is equal to -1. तो हमको P का कोऑर्डिनेट मिल गया -1, 0. चलो, अब तुमको Q का कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके लिए x is equal to 0 डाल दो. तो इसमें x के लिए 0 डालने से y minus 3 by 3 by 4 into, सॉरी, x के लिए 0 डाला ना, तो -3. So y minus 3 is equal to -9 by 4 और y is equal to -9 by 4 plus 3, y is equal to 3 by 4. बोलो. तो ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आएगा 0, 3 by 4. Now can you find the length of PQ? Because P और Q का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो PQ will be square root of 3 by 4 minus, या फिर x कोऑर्डिनेट पहले लेते हैं, no issues, -1 minus 0 the whole square plus 0 minus 3 by 4 the whole square का root. This is root of 1 plus 9 by 16. That is square root of 25 by 16. That is 5 by 4. PQ को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं. तो ये लाइन को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ. ऑल ऑफ यू लुक हियर. 4y minus 12 is 3x minus 9.
that is 3x minus 4y. 3x minus 4y is equal to -3. पूरा -3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 3x by -3 प्लस 4y by 3 is equal to 1. पूरा -3 से डिवाइड कर रहे हैं मैं तो क्या आएगा x by -1 प्लस y by 3 by 4 equal to 1. तो मतलब द लाइन इज मेकिंग -1 intercept on the x-axis and 3 by 4 on the y-axis. तो ये है -1 और ये है 3 by 4. You can use Pythagoras theorem to find the distance. D square is equal to 3 by 4 का square plus -1 का square. That is 9 by 16 plus 1. That is 25 by 16. Therefore, D is 5 by 4. Yes. And don't forget, distance formula is nothing but Pythagoras theorem. Pythagoras theorem से ही तो मैंने वो बनाया था distance formula. Yes, sir. भूल गया क्या सब? No. देखो. Suppose this is x1 y1. क्या मतलब है उसका? मतलब है कि ये x1 है और ये y1. मतलब ये डिस्टेंस x1 है और ये हाइट y1. Take another point x2 y2. तो ये है x2 और ये है y2. So we know that ये जो डिस्टेंस है ये होगा x2 माइनस x1 और ये जो डिस्टेंस है वो होगा y2 माइनस y1. Now to find AB, let us use Pythagoras theorem. AB square will be this square plus this square. That is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. अगर तुमको डिस्टेंस DAB चाहिए तो find the square root. ये Pythagoras theorem ही है. Sir. बहुत से जगह Pythagoras theorem यूज किया हमने. What is that first formula that comes to your mind when we think about trigonometry? सबका अलग अलग होगा फिर भी बताओ. एक फॉर्मूला जो मन में आता है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला. Did I force you to say that? No. You said. So that's what's come to our mind first. So look here, all of you. If this is theta, let this be u, v, w. What is u square plus v square? W square. पूरा w square से डिवाइड करो तो u by w the whole square plus v by w the whole square is equal to 1. u by w को हम बोलते हैं cos theta और v by w को बोलते हैं sin theta. That's how I made sin square theta plus cos square theta is equal to 1. All credits to Pythagoras. Yes, sir. कैसे सॉल्व किया that's not the important thing that you have to check. क्वेश्चन का मीनिंग even before I give you time to find out what it is, I actually started explaining. If the coordinates of the points of A and B are given, then the length of the that part is confusing. Right? The length of the portion of AB. So length of the portion of AB intercepted between the axis. तो मतलब AB से पास करने वाली एक लाइन है उसका एक पोर्शन is being intercepted by the coordinate axis. उसका लेंथ कितना? Then the approach of dealing with it. How did we crack that? We found the equation of a line passing through A and B. Then found out the coordinates where these two the lines cut the coordinate axis. P और Q का coordinate निकाला. P का coordinate निकालने के लिए ये आइडिया यूज किया
कि p is on the x-axis, therefore y is 0. ऐसा हमको कोऑर्डिनेट मिल गया डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दिया, या फिर जैसे शी सेड इंटरसेप्ट फॉर्म से हमको दोनों इंटरसेप्ट मिल गए. Yes. Linear equation, linear equation, linear equation. So they all represent lines. And what's so special about these lines? They are concurrent. Concurrent lines मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होना. If all the lines pass through one single point, देखो दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो जरूर इंटरसेक्ट होगा एक पॉइंट पे. Yes. और थर्ड लाइन अगर उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा तो वी कैन से ऑल द लाइंस आर कॉन्करेंट. बोलो. Yes, sir. चलो. So what's the necessary condition for them to be concurrent? That's the question. ठीक, दो लाइंस लेते हैं. Lx plus my plus n equal to 0, and the second line mx plus ny plus l equal to 0. ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट होगा? Let us find the point of intersection. फर्स्ट इक्वेशन को मैं जरा n से मल्टीप्लाई करता हूँ. n into first equation. So I'll get lnx plus mny plus n square equal to 0. सेकेंड इक्वेशन को मैं n से मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी m से, तो आएगा m square x plus mny plus lm equal to 0. All this was done to eliminate y, to make its coefficient same. तो क्या आ गया? ln minus m square into x plus n square minus lm equal to 0. Therefore, x is equal to lm minus n square divided by ln minus m square. Yes. अभी देखो ना, ये लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई का कोएफिशिएंट नंबर्स नहीं है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है. हमको बस आइडिया कैरी फॉरवर्ड करना है. दो तीन लाइन दी है. यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू? दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं अभी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाला हूं. द थर्ड लाइन passes through that point. Concurrent है ना? Yes. That means this x and y that I am going to get must satisfy the third equation. तो ये x मिला, अभी मुझे y कोऑर्डिनेट भी निकालने वाला है, और ये दोनों x और y वो तीसरा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, बिकॉज द थर्ड लाइन ऑल्सो passes through the same point. Yes. चलो, तो x का वैल्यू मिल गया. Let us use the first equation. L into lm minus n square by ln minus m square plus my plus n equal to 0. ये सॉल्व करके हमको y निकालना. Let us my is equal to n minus l into
lm minus n square by ln minus m square. बोलो. Yes. So minus n. Hmm. Yeah. So my is equal to minus ln square plus m square n minus l square m plus l n square whole divided by ln minus m square. चलो कुछ तो कम हुआ. अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें m है, इसमें m है और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक m है. Therefore y is equal to mn minus l square divided by ln minus m square. Yes, sir. बोलो. We just finished solving the two equations to get the point of intersection. We have to substitute this in the third equation. So n into lm minus n square by ln minus m square plus ly. Y is mn minus l square by ln minus m square plus m equal to 0. बोलो सब लोग. Yes. हाँ, ये डिनोमिनेटर सेम है, वो दोनों निकालने के लिए मैं उसी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करता हूँ. तो आएगा n इंटू एल एम माइनस एन स्क्वायर प्लस l इंटू एम एन माइनस एल स्क्वायर प्लस m इंटू एल एन माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0. बहुत कंजेस्टेड होने वाला ये सब. क्या है ये? एल एम एन माइनस एन क्यूब प्लस एल एम एन माइनस एल क्यूब प्लस एल एम एन माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0. That is L cube plus M cube plus N cube minus 3LMN equal to 0. Yes, sir. Yes, sir. Straight back to 9th standard. Students, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. बोलो. Yes. And याद है
वी लर्नड अ कंडीशन, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। सो ये हमको 0 मिल रहा है ना, इसका क्या मतलब है, l प्लस m प्लस n इज 0। Yes, sir. बोलो स्टूडेंट्स। So, what idea we carry forward from this question, from the experience of this question? If anyone asks you, can you give me examples for 3 lines which are concurrent? Here are 2x plus 3y plus 4 equal to 0, 2x plus 4y plus 2 equal to 0, then 3x plus 2y plus 3 equal to 0. मैंने 3 नंबर्स लिया 2, 3, 4, उसको अलग अलग ऑर्डर में शफल किया। लुक एट योर लाइन, lx plus my plus n equal to 0, mx plus ny plus l equal to 0, nx plus ly plus m equal to 0। बस वही 3 नंबर्स को शफल करके 3 इक्वेशन बना दिया। ये देखो ना, इसमें ये क्या है, l m n, इधर भी क्या है, l m n, इधर l m n। lx plus my plus n equal to 0. They are asking the values of l m n। अगर मैं यहाँ पे ऑल क्लिक करेगा ना तो आई विल गेट 1 1 1। एल एम एन का डिफॉल्ट वैल्यूज उन लोग 1 1 1 लेने वाला है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में बोला है कि ब्रैकेट में लिखा है एल एम एन आर नॉट इक्वल, तो आई विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ एल एम एन लेटर। Let us go to the next equation, that is mx plus ny plus l equal to 0. Next, nx plus ly plus m equal to 0. एल एम एन के लिए सब हमने 1 डाल दिया, तो मतलब 1x plus 1y plus 1 equal to 0। नेक्स्ट इक्वेशन 1x plus 1y plus 1 equal to 0, सब सेम है। चलो लेट मी चेंज द वैल्यूज। तो कंकरेंट नहीं है, कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज द नेसेसरी कंडीशन वाज l plus m plus n must be 0। क्या प्रूफ किया हमने इसमें? द लाइन्स आर कंकरेंट इफ l plus m plus n is 0। मैंने ऐसे Yes, अपने sir. मर्जी से कोई तो m n डाल दिया। गॉट इट? चलो यहाँ पे n का वैल्यू 4.5, l का वैल्यू -0.5। टेल मी, तुम लोग बताओ मुझे m के लिए कौन सा वैल्यू डालूं? -4. हाँ, तीनों को ऐड करके 0 आना चाहिए। 4.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5 इज 4, और m का वैल्यू -4 डालना पड़ेगा ताकि l प्लस m प्लस n बिकम्स 0। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, वाई टू वेस्ट टाइम? यहां पे मैं m के लिए वैल्यू सी, every time I cannot calculate and find m, so I'm going to do one thing,
L plus m plus n is 0, so m must be minus L minus n. Yes, sir. तो मैं m के लिए वैल्यू देता हूं माइनस L माइनस n. See that. अगर मैं n चेंज कर दिया तो देखो ना, आई एम चेंजिंग n. So what must change? L I am not changing. M must change. तो एक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बना के रखा है m के लिए. जैसे जैसे n चेंज होगा वहां पे m का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. मतलब ये L प्लस m प्लस n क्या है? ऑलवेज 0. बिकॉज द मोमेंट m इज माइनस L माइनस n, इसका मतलब क्या है? L प्लस m प्लस n इज 0, and that was the only condition necessary for these three lines to be concurrent. Yes, sir. सो ये क्वेश्चन करने के लिए हमने इस साल का कोई भी आइडिया यूज नहीं किया. ये चाहे तो 10th में भी कर सकता था. क्या आइडिया क्या यूज किया? आइडिया कुछ नहीं यूज किया. कॉन्करेंट का मीनिंग बस जाना था. जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट होता है उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा लाइन भी पास होना चाहिए. तो उसके लिए मैंने दो लाइंस को सॉल्व करके उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला. इट टुक सम टाइम बिकॉज वो नंबर्स नहीं दिया था. एल एम एन में था तो इसलिए ऑल्जिब्रिक मॉडिफिकेशन में टाइम लगेगा. और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए बिकॉज द थर्ड लाइन ऑल्सो पास थ्रू दैट पॉइंट. तो ऐसा करते करते लास्ट में हमको कंडीशन मिला कि एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3 LMN इक्वल टू, ये 10th वाले को मिलेगा यहां तक. उसके बाद फिर 9th का याद है तो आगे बढ़ेगा. बोलो. Yes, sir. Those students who always prepare for competitive exams must carry this ready-made answer in mind. वहां पे शायद दो इक्वेशन दिया रहेगा, तीसरा इक्वेशन में कुछ नंबर्स मिसिंग रहेगा, बट अल्टीमेटली यू मस्ट नो दैट L प्लस M प्लस N इज 0. तो वो वाला डायरेक्ट आईडी यूज करके तुमको वो वैल्यू मिलेगा. हमको हमारे एग्जाम फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन में प्रूव करना होता है. वहां पे जस्ट मल्टीपल चॉइस है तो यू जस्ट नीड टू फाइंड द आंसर. तो इफ यू वांट टू गेट द आंसर इन द क्विकेस्ट मेथड यू हैव टू कैरी फाइनल प्रोडक्ट्स. Let me check if I shuffle these values, will it affect or not. यहाँ पे n के बदले l और l के बदले n. No, they are still concurrent. बस मुझे ये कंफर्म करना था कि is it necessary that they have to be cyclic. मतलब l m n साइक्लिक. फर्स्ट इक्वेशन में देखो L से स्टार्ट किया, LMN कोएफिशिएंट देखो ना. सेकंड फिर M से स्टार्ट किया, MNL. फिर नेक्स्ट LMM. Yes. But I just interchanged that and saw that it is still concurrent, so that is not necessary. Show that the straight line which passes through the point makes an angle tan inverse 3 with the x-axis passing through the origin. By the way, what is tan inverse
3. All of you look here. Tan theta is equal to 1. Therefore, theta is equal to tan inverse 1. But you know tan inverse 1 is pi by 4 or 45 degree. Tan theta 1 कब होता है? Which angle के लिए 1 होता है? हाँ, तो थीटा का वैल्यू क्या है? 45 पाई बाय 4 रेडियंस. लेकिन मैं बोल रहा था यहाँ पे tan inverse 1 which we call inverse trigonometry. This is trigonometric function. This is inverse trigonometry function. लेकिन tan inverse 1 का वैल्यू तुमको पता है पाई बाय 4 आगे. लेकिन क्या तुमको tan theta is equal to 3 दिया है तो थीटा निकालने आता है? You know which angle? Do you have a list of any angle where tan theta is 3? No, तुम्हारे पास कौन सा है? 0 है, 1/√3 है, 1 है, √3 है, नॉट डिफाइंड है. लेकिन tan थीटा अगर 3 आ गया तो विच थीटा? हमारे माइंड में नहीं है. सो यू कैन एट द मोस्ट राइट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3. पर tan इनवर्स 3 क्या है वो सर? कैलकुलेटर में मिल जाएगा 71.56 डिग्री. लॉग टेबल में भी मिलेगा. लॉग टेबल. एंड यू मस्ट लर्न टू कैलकुलेट यूजिंग लॉग टेबल. फिजिक्स केमिस्ट्री में सब लॉग टेबल्स कैलकुलेशंस के लिए अलाउड है. केमिस्ट्री में एटलीस्ट आगे जाके पीएच वैल्यू निकालने के लिए you know pH is minus log हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर पता है तो उसका नेगेटिव लॉग ले लो, तुमको उस कॉन्सेंट्रेशन का पीएच वैल्यू मिलेगा. तो लॉग सिर्फ इसके लिए नहीं, आगे कैलकुलेशन के लिए लॉग चाहिए. थोड़ा आगे जाने दो. I'll tell you to bring the log table or buy a log table. We'll learn how to calculate using log table. तो 12th वाले भी बोल रहे थे कि उनको थोड़ा लॉग सीखना है. तो देखता हूँ मैं, जिस दिन में उनको लॉग ले रहा है आई विल आस्क यू टू ज्वाइन ऑनलाइन. बस वो tan इनवर्स क्या है वो बता रहा था. शो दैट द लाइन makes an angle tan inverse √3 with the x-axis. Don't unnecessarily read every detail in the question. You just read what is needed. Show that the line makes an angle with the x-axis. बताना कि वो लाइन x-axis के साथ एक एंगल बना रहा है और वो एंगल है tan inverse 3. ओरिजिन से पास होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है. और फिर कहां से? 4,12 से. फाइंड द स्लोप. tan थीटा इज इक्वल टू 12 minus 0 by 4 minus 0 which is 3. Therefore theta is tan inverse 3. Yes, this is the angle. Show that the line which passes through the point 412 makes an angle tan inverse 3 with the x-axis, and the line also passes through the origin. 4,12 से पास करने वाले सारे लाइन का स्लोप यही है क्या? नहीं, और भी डिटेल चाहिए, बिकॉज 4,12 से तो बहुत सारे लाइन पास होता है. हाँ, तो ऐसा एक लाइन जो ओरिजिन से भी पास होगा. इट मेक्स एन एंगल tan इनवर्स 3. ये tan इनवर्स 3 क्या है? एंगल है. बस हमको उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, वो आइदर लॉग टेबल या साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा. tan इनवर्स 3.
Find the equations of the straight lines which pass through the origin and trisect the portion of the straight line intercepted between the axes. मीनिंग समझ में आया क्या? ना इंटरसेप्टेड वाला तो अभी फेमिलियर हो गया ना, देखो ये है लाइन x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, मतलब ये a है और ये b है, या तो ये है a कॉमा 0 और ये है 0 कॉमा b। ये इंटरसेप्टेड पोर्शन है ना ए बी, उसको ट्राइसेक्ट करने वाला पॉइंट्स है ये और ये। डू यू नो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोस टू पॉइंट्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला? 1:2 रेशियो यूज करो, ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, और 2:1 रेशियो से तुमको ये पॉइंट भी मिल जाएगा। कैन यू फाइंड द पॉइंट्स? जस्ट फाइंड द पॉइंट्स। मुझे तो डायरेक्टली मिल गया ये 2/3 ए कॉमा बी, a/3 कॉमा 2/3 बी। कमान तुम लोग फाइंड आउट करो। ये नहीं मिला? हाँ b/3, सॉरी b/3। Yes. Yes, sir. मिला? Yes. ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, ये पूरा ए है ना, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये है a/3 और ये है 2a/3 और ये है 3a/3 विच इज a। फिर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पूरा b था ना ये, तो उसका 1/3, 2/3 और ये पूरा b। तो फिर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a/3 कॉमा 2b/3, Yes. और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2a/3 कॉमा b/3। दैट्स हाउ आई। Yes, sir. चलो स्टूडेंट्स, सो say this is P and Q. P and Q are the points which trisect the intercepted portion of the line x by a plus y by b equal to 1 between the coordinate axes.
Do you know to find the equation of PO? P का coordinate मिल गया ना? Can you find the equation of PO? Can you find the equation of QO? यही चाहिए था. देखो क्या फाइंड आउट करो. Find the equation. Listen. Find the equations of the straight line which passes through origin and trisect the portion of the line intercepted between the axes. Yes. Yes, sir. Meaning clear है अभी? Yes. Yes, sir. What will be the equation? Students ये देखो जरा. Suppose एक point है U comma V and when we join it with the origin you get a line. उसका slope क्या होगा? It's V by U Yes. because this is V and this is U. Yes. डिटेल में कर रहे हैं तो V minus 0 divided by U minus 0. चलो तो OP का इक्वेशन क्या होगा? Y minus 0 is equal to slope 2 by 3B divided by A by 3 into X minus 0. बोलो. Yes. 3 कट हो जाएगा तो y is equal to 2b by a into x. Yes. See, there is no c term because lines passing through origin will not have c term. यह है equation of OP. OQ का equation क्या होगा? Y minus 0 is equal to b by 3 divided by into x minus 0. इसमें 3 कट हो जाएगा. Y is equal to b by 2a into x. Yes. Yes. X by a plus y by b equal to 1 is a line which makes intercepts A and B, but I have not given the values for A and B. Anyway, y is equal to 2b by a into x is one line. The other line is y is equal to b by 2a into x, all waiting for the values of a and b. You just tell me, क्या वो दो लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रहा है वो इंटरसेप्टेड पोर्शन को ट्राइसेक्ट कर रहा है? दिस पोर्शन आर इक्वल. अगर मैं a बढ़ा रहा है, still look at the two lines. Are they trisecting the intercepted portion? Yes, sir. ट्राइसेक्ट जैसा फील हो रहा है कि नहीं? Yes. Hmm? Sir. Puro. Yes. Yes, sir. Again, I told you the most important part was not how we solved it, but knowing what the question was. So they're gonna find the equation of a straight line which passes through the origin and trisecting the portion of the line which is intercepted between the axes. Find the equation of the bisectors of the angles
between the coordinate axes. Funny question है ये तो. ये है ना coordinate axis. Find the equation of the bisector. This is the bisector. उसका इक्वेशन होगा y is equal to x. अरे y is equal to mx plus c, लेकिन ये 45 डिग्री है ना, बाइसेक्टर है ना, तो y is equal to स्लोप क्या होगा, tan 45, and it is passing through origin. Tan 45 is 1, y is equal to, but y is equal to x, you may look at it in different forms. You can look at it as y is equal to 1x, but the slope 1. But the other way to look at is y is equal to x is a straight line which is full of points whose x coordinate and y coordinate are same. Y is x, मतलब 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. The y is same as x. Yes. Yes, sir. So इस graph paper में collect all points where y is equal to x. You get this yellow line. Yes. And this is the other bisector. Because ये x axis y axis के बीच में भी angle bisector चाहिए ना, उसका equation होगा y is equal to minus x. How? Because this line is making 135 degree. So y is equal to tan 135, so that is slope, x plus 0. Y is equal to minus 1 into x. Tan 135 is tan 180 minus 45. 180 minus 45 or 135 is in the second quadrant. वहाँ पे tan नेगेटिव है, इसलिए minus tan 45, which is minus 1. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Find the equation of straight line cutting off an intercept minus 2 from the y-axis and being equally inclined to the axis. See the red line? It is cutting an intercept minus 2. Yes. Yes. But is it making equal angles with the axis? No, it is not at all inclined to one of the axes. Now, this is a line which is equally inclined to both the axes. This is a line which is equally inclined to both the axes. मतलब making equal angles with the x-axis and y-axis. See that? Yes, sir. It's a line which is making equal angle with the x-axis and y-axis. And having intercept minus 2. Oh, that has changed? Sorry. हाँ नहीं यही है पॉइंट. लिखा minus 2 नीचे, लेकिन पॉइंट उधर है. Tell me, does that line satisfy all the conditions? Making equal angles with the x-axis and y-axis and
cutting off intercept -2 on the y-axis. Oh, wrong. Students पूरा wrong हो गया. Well, ये गलती से ये करेक्ट हो गया. Actually, the lines are this one and this one. ये है दो लाइंस जो x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है and is cutting off an intercept of -2 from the y axis. Yes, sir. From the y axis, not on the y axis. मैंने पहले जो बनाया था वो y axis पे बनाया, लेकिन बोला कि from the y axis. तो y axis से -2 यूनिट्स, तो y axis से -2 यूनिट्स तो इधर है. बोलो सब लोग. Yes. चलो ये Yes, sir. पॉइंट है -2, 0 and we know since it makes equal angles this will be 0, 2. तो ये इंटरसेप्ट कितना -2 और ये 2 और ये -2. चलो ये ग्रीन लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? x by -2 plus y by 2 equal to 1. इंटरसेप्ट फॉर्म यूज किया मैंने. Yes, sir. पूरा -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x minus y plus 2 equal to 0. फिर ये इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं तो दूसरा फॉर्म भी है हमारे पास. ये देखो y is equal to mx, the slope is 1 because it makes 45 and it is making an intercept of 2. बोलो तो x minus y plus 2 equal to 0. Yes. चलो अभी ये लाइन y is equal to slope -1, y intercept -2. Therefore, x plus y plus 2 equal to 0. X minus y plus 2 equal to 0. See, isn't that line making equal angle with the x-axis and y-axis and cutting at a distance of -2 from the y-axis? Yes. Find the equation of the straight line which passes through the point 3, 4 and have intercepts on the axis equal in magnitude but opposite in sign. Anjali, these are all the questions that I have forwarded. ओके, तो कैसा लाइन चाहिए हमको? हमको चाहिए ऐसा लाइन जो 3, 4 से पास होगा और बनाएगा इक्वल इंटरसेप्ट लेकिन ऑपोजिट साइन. मतलब ये अगर k है तो ये भी k. द लेंथ इज k. मतलब a का वैल्यू -k और b का वैल्यू k. बोलो. Yes. Therefore, equation will be x by -k plus y by k is equal to 1.
बोलो x by a plus y by b equal to 1. But we know that this line passes through 3, 4. So 3 by minus k plus 4 by k must be 1. That is 1 by k must be 1. That means k must be 1. क्या हुआ? k 1 आया ना? So what's the equation of the blue line? X by minus 1 plus y by 1 equal to 1. पूरा minus 1 से multiply करो. X minus y plus 1 equal to 0. Yes. और भी एक लाइन पॉसिबल है यहाँ पे विच विल मेक इक्वल इंटरसेप्ट, लेकिन दे आर ऑफ सेम साइन. A and B both are positive. Then we want such a line passing through 3, 4 such that the sum of the intercept is 14. तो इक्वेशन होगा x by a plus y by 14 minus a equal to 1. A and B are the intercepts, but question says a plus b must be 14, for which b must be 14 minus a. But you know the line passes through 3, 4. So 3 by a plus 4 by 14 minus a is 1. 42 minus 3a plus 4a is equal to 14a minus a square. Yes, yes. So a square minus 13a plus 42 is equal to 0. A square minus 6a minus 7a plus 42 equal to 0. A into a minus 6 minus 7 into a minus 6 equal to 0. A minus 6 into a minus 7 equal to 0. So a is equal to 6 or a is equal to 7. If a is 6, b will be 8 and b will be 7, because sum must be 14. Yes. So the equation is x by 6 plus y by 8 equal to 1 and x by 7. Any mistakes, friend? Y by 7 equal to 1. Check with them. First of all, we have a point 3, 4. और फर्स्ट इक्वेशन मेरा था x minus y plus 1 equal to 0. See, it's a line passing through 3, 4. It's a line making equal intercept but of opposite sign. X axis में -1 और y axis में 1. फिर क्या चाहिए था? ऐसा एक लाइन जो ऐसा इंटरसेप्ट बनाएगा जिसका सम 14. तो वो हमको इक्वेशन मिला x by 6 plus y by 8 equal to 1. See? They are not making equal intercepts, but the intercepts का sum 14 है and also passing through 3, 4. फिर और एक लाइन 7, 7.
ये भी 3,4 से ही पास होता है. The first line was x minus y plus 1 equal to, वो भी 3,4 से पास होता है. Yes, sir. ग्रीन लाइन का कंडीशन था कि इट मस्ट मेक इक्वल इंटरसेप्ट बट ऑपोजिट साइन. ब्लू एंड रेड लाइन का स्पेशलिटी ये है कि द सम ऑफ द इंटरसेप्ट मस्ट बी 14. बोलो सब लोग. Yes, sir. हाँ, तो ऐसा एक्चुअली हमने बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला गया ये टॉपिक बाय डूइंग सम क्वेश्चंस टुडे, स्पेशली द वन concurrent. What was the first question? Locus. Okay,